Hi everyone. Very good evening to all of you. I am Karthik Mathur, or people call me Karthik भैया from Coding Blocks. आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं. Let me welcome him first. Welcome Aditya to this चैनल, है ना, यूट्यूब चैनल ऑफ कोडिंग ब्लॉग्स. तो कैसा लग रहा है तुम्हें कोडिंग ब्लॉग्स में फिर से यूट्यूब चैनल पे आके? राइट, ऐसे लग रहा है पुरानी यादें ताजा हो गई है। हाँ. तो बहुत अच्छा लग रहा है। it's really great to have you back on Coding Blocks YouTube channel. So I hope that आज जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ आएंगे उन लोगों को ये पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली एक मांग बेस्ड कंपनी को अगर हम मतलब ड्रीम सभी करते हैं ऑफ कोर्स कि भाई हमारा राइट मांग बेस्ड कंपनी में हो जाए. और द रीजन ओनली रीजन इज पैसा. भाई पैसा थोड़ा मांग के अंदर ज्यादा मिलता है, वरना तो कोई भी मतलब नहीं जाना चाहेगा. So for that particular राइट thing, I feel that today's session is going to give you a hint about कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं और किस किस तरह से तुम्हारे साथ कॉलेज के अंदर तुम्हें अपने आप को प्रिपेयर करना है, गेयर अप करना है, सो दैट तुम लोग भी एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में टारगेट कर सको. राइट। जस्ट तो टू ऐड ऑन आदित्य. दिस, हाँ सिर्फ हाँ. पैसा नहीं होता, उस वर्क वर्क कल्चर इज एट इट्स पीक। मतलब हाँ. एम्प्लॉय रिस्पेक्ट इज एट इट्स पीक। तो ट्रू, बट फॉर अ स्टूडेंट जो भी एक कॉलेज में है, हाँ उसका जो एम होता है उसको टारगेट करने का, वो तो मतलब ठीक है. वो तो यही देखता है भाई मेरे को 50 लाख का पैकेज मिल जाए, मेरे को 60 लाख का पैकेज मिल जाए. अपार्ट फ्रॉम मतलब वो तो कंपनी में जाके ही पता चलेगा ना कि भाई हाँ, राइट 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 यू आर इम्पोर्टेंट और इस तरीके से आपको काफी प्रिविलेजेस मिल रही हैं, फ्लेक्सिबिलिटी राइट। मिल रही है, यू आर इंडिपेंडेंटली वर्किंग इनटू थिंग्स और नए प्रोजेक्ट्स में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हो. एग्जैक्टली। तो जैसे कि आदित्य, फर्स्ट ऑफ ऑल आईड लाइक टू आस्क यू कि भाई जैसे ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जैसे आपने जब अपने कॉलेज में स्टार्ट किया था, तो कॉलेज में जब आप थे और कॉलेज के अंदर ऑफ कोर्स सबको यही डर रहता है, किसी को नहीं पता होता हम कहाँ जाएंगे. और राइट कॉलेज राइट। के अंदर कंपनीज आती हैं नहीं आती, वो भी अलग ही मतलब सियापा होता है अगर भाई हमारा कॉलेज ऐसा है जिसके अंदर कंपनी नहीं आती. तो तुम्हारी क्या सिचुएशन थी इन योर कॉलेज? मतलब काफी टाइम हो चुका है अज्यूम कॉलेज छोड़े हुए. राइट राइट। हाँ. Okay, so let me try to wrap it up. So let's start from my first year only. So when I joined college, I'm from Chandigarh group of colleges, Landra, and when I joined the college, my dream company was always Amazon. So ओके. there's no doubt about that. And so first second year, तो you're like कि just out of school and college में गए हैं, एकदम से सारा freedom मिल जाता है, तो बस पता ही है फिर क्या होता है. सो देयर इज नो वन टू गाइड यू, सो नहीं पता लगता है कि फर्स्ट सेकंड ईयर में क्या करना चाहिए. और हमारे टाइम पे भी हमको नहीं पता था. हाँ हाँ. पीपल यूज टू से दैट लाइक फोकस ऑन मार्क्स एंड ऑल, तो वो सब नहीं होता है, वो नहीं करना है हाँ. इतना. बट स्टिल हाँ. एक मेंटेन करके रखना है टू जस्ट टू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स. एंड उसके बाद सो फर्स्ट सेकेंड ईयर तो कुछ नहीं किया, नो आइडिया कि क्या करना चाहिए था. और हाँ हाँ. सिर्फ थोड़ा इधर उधर खेलने कूदने में बिता दिया सारा टाइम, बंक्स मारने में एंड ऑल. हाँ. राइट. तो उसके बाद से जब सेकेंड ईयर एंड होने में आया तो कुछ रियलाइजेशन हुआ कि यार कुछ किया तो है नहीं है. सो नाउ व्हाट टू डू. हाँ. हाँ. Now one of my friends suggested me a course at Coding Blocks. He also did the same, and so I just took his advice. So he works in Flipkart as a software developer too, and so he advised me ki don't do the local uh, internship that you get, like just certificate के उस पे, तो you can. ये बहुत बहुत जरूरी चीज है. मतलब ये मैं Hmm. देखता हूँ जैसे कि अभी क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, दे रन आफ्टर दिस. एग्जैक्टली, एक्चुअली कॉलेजेस में ऐसा होता है, जो टीचर्स हाँ होते हैं दे आस्क देम टू ब्रिंग योर सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, ब्ला ब्ला ब्ला. तो हाँ. इट्स लाइक वी नीड टू चेंज. हाँ. ट्रू ट्रू. या तो तो उस हम्म. हाँ, सो उसके बाद देन आई टुक दिस डिसीजन. मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स सेड कि ये क्या कर रहा है, क्यों
पैसे वेस्ट कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। देन आई जस्ट ठीक है, एक कान से सुना दूसरे से निकाला। देन आई वेंट टू दिल्ली एंड डिड अ ऑफलाइन कोर्स। सो वहाँ पे आई केम टू रियलाइज दैट यस, डेटा स्ट्रक्चर इज समथिंग आई नीड टू डू। वो कुछ हाँ, I was totally zero at data structure, and got a realization that we were two people, me and my friend. So we got a realization that we don't know anything. People of our batch knows everything. तो ऐसा होता है हाँ। जब खुद को कुछ नहीं आता है तो ऐसा लगता है बाकियों को सब कुछ आता है। ट्रू, हाँ, बिल्कुल। so उसके बाद then the course was really good, and जो जिस तरीके से समझाते हैं कोडिंग क्लास में, दैट्स स्पेशली उस टाइम, लाइक देयर इज नो कंपटीशन, लाइक मतलब बहुत अच्छे लेवल पे समझाते हैं, एकदम डेप्थ में जाके बहुत आराम आराम से। एंड फिर उसके बाद सो इट वाज अ 1 month और 2 month ऑफलाइन कोर्स, एंड उसके बाद आई केम बैक टू कॉलेज, एंड इन थर्ड ईयर द I didn't notice any change in myself, but people with whom I used to people of my batch, they noticed a humongous difference. They were constantly asking, भाई क्या किया तूने अपनी छुट्टियों में? हाँ, कहाँ से हाँ। कोर्स किया? ये क्या है कोडिंग ब्लॉक्स? Blah 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 and all this stuff. So then things got changed really quickly. So then I decided upon कि yes, now bunk bunk बहुत हो गया है, now we need to focus on our future. तो तुम So लाइफ में सीरियस होना मतलब स्टार्ट हो गए कि अब मेरे को अपने करियर ओरिएंटेड काम करना है, ऐसे right. रैंडमली कुछ भी करते रहना। राइट, एक्चुअली दैट वाज द ओनली टर्निंग पॉइंट वो कॉलेज वाली जर्नी में, कि कब से एकदम चेंज आया। सो देन आई हाँ, स्टार्टेड डूइंग डेटा स्ट्रक्चर्स, खुद से प्रैक्टिस करने लग गया, मतलब बहुत इंटेंसिवली और एग्रेसिवली। अगर अब भी जाओगे तो गीक्स और गीक्स पहले होता था बहुत, सब गीक्स और गीक्स करते थे, तो वहाँ पे कॉलेज रैंक 1 और 2 और 3 होगा समथिंग। आज थोड़े दिन पहले जूनियर का कॉल आया था, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम। ही टोल्ड मी कि भैया मैंने आपको सरपास कर दिया है गीक्स और गीक्स की रैंक में। अच्छा, So ओके। it's good to hear that. And फिर then I also started taking participation in college competitions, and I also won cash prizes, and which was like I never imagined कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। like, and फर्स्ट टाइम मिलता है we ना तो यकीन नहीं होता मतलब कि वाह! ये exactly इतना आसान था जीतना, मतलब ऐसे ही करके हो जाता है क्या exactly बस? exactly and like trust me, there was no competition उसके पीछे, मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज था। And me and my friend also went to Punjab University's some data structure competition, like some competitive coding competition. So ओके, we due to one very minor error, we were third runner up, not third position, it's third runner up, ओके, and we like 7,000 cash prize slipped from our hand. अच्छा, And हम दोनों को इतना बुरा लगा कि बस एक कोई प्राइम नंबर का क्वेश्चन था कि बस हाँ, छोटे से एक गलती की वजह से पूरा स्किप हो गया वो। ओके। So then after that, now coming, so placement start होने वाला था, and suddenly we got a news कि हाँ कोविड भी आ रहा है अब। So ओके, वहाँ से सब ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे थे, कॉलेज की छुट्टियां पड़ गई, तब तो एवरीवन वाज लाइक कि हाँ छुट्टियों पे जा रहे हैं, वेकेशन पे जा रहे हैं, अभी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। हाँ, So हाँ, at that time I saw coding blocks advertisement for ISA batch. So if you guys don't know what is ISA, it is like it's a 6 month, ओ कार्तिक भैया मेरे से ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नहीं बट तुमने की है तो स्टूडेंट्स वुड बी बेटर विलिंग कि भाई एक बार हमें उनसे पता चले जिन्होंने वो चीज़ कर रखी है। ओके ओके राइट। तो बेसिकली दिस कोर्स इज लाइक पूरे 6 महीने का कोर्स होता है, एंड टू एंटर इनटू दिस बैच you have to clear one online assessment test, which at my time consisted of 5 questions, हाँ, and हाँ, followed up by an interview round. So I tried once, was not able to, then again got a ओके, second link। ओके। I'm just being brutally honest। then अच्छा मुझे नहीं पता था तुमने मल्टीपल टाइम वो वाले टेस्ट किए थे। right 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 so at that time getting into that batch was something similar to cracking a very big company, because the promises that were shown there is like you guys will provide a placement support and the whole development as well। development का idea भी नहीं था तब, सिर्फ DSA किया था तब तक, and also 3 months का पूरा DSA competitive coding के साथ and all।
So उसके बाद I again gave test and then got shortlisted, and I also gave one interview of the same. And then later I got to know that I was shortlisted for the batch, and I was really very happy. My flatmates would know कि क्या situation थी उस time मेरी. I was really happy. So there are two models to pay. So I chose like uh, pay 50%, like 50,000 upfront, and then pay later after getting placed. There's one more, like pay zero in the beginning and only pay when you get placed. And there's हाँ, also a limit, like like the lower limit कि इससे ऊपर लगोगे तभी you have to pay, or else you don't have to pay anything. So that was like very good approach. And so उसके बाद it was supposed to be offline, but due to COVID it कोविड ने सारा uh, उलट-पुलट कर दिया था right, चीज़ों को ना। बट मैं मानता हूँ कि exactly, कोविड अगर नहीं आया होता तो जैसे फॉर एग्जांपल जो ऑनलाइन के अंदर चीजें होती है ना, आई फील कि अगर कोई अ, मतलब पढ़ सकता है, जैसे कि कंपनी के अंदर जब आप जाते हो एवरीथिंग बिकम्स लाइव, क्योंकि अब आप ऑफलाइन तो विजिट कर ही नहीं सकते हो, तो उससे उसमें right, थोड़ा सा right, ना इंट्रैक्शन वाली चीजें थोड़ी बढ़ जाती हैं। हाँ, यू हैव दैट कम्युनिकेशन स्किल्स, यू हैव कि हाँ थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाता है कि चीजें करनी कैसे इंडिपेंडेंटली, जब हमारा को कोई बिल्कुल right, right, सामने right, बैठ के स्पून फीडिंग नहीं कर रहा। right, 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 हुँ, exactly. So after then, yes, due to this, like no one was sure what is COVID, how people are going to deal with it. There was no concept, like very less concept of like work from home or हाँ, something like this, so live classes and all. So um so due to which the course kept on postponing for like 10-20 days. So then we came to know that yes, now it is finally getting started online way. So little disappointed कि क्या हो रहा है. So फिर उसके बाद हाँ, उसके कोविड बाद था तो क्या ही करते। राइट राइट राइट, फिर उसके बाद yes, then the batch started, and फिर कार्तिक भैया was very different. So my mentor was Karthik Bhaiya in the whole course. Like very light-hearted. He used to have very light-hearted conversations. Like used to teach very light-heartedly, and कि इतने अच्छे से कि आराम से किसी को समझ आ जाए. So that was the best part. And the course was of like 3 months of DSA and followed by 3 months of web development. So in DSA, we also used to get some problems from competitive websites, for example, Code Forces, Code Chef, and there's one more A to Z, लीड something कोड, like that. मेन लीड कोड, कोड फोर्सेस, कोड शेफ एंड लीड कोड। Yes, mainly the main was lead code, but lead code was like DSA side, and the rest of the two were like competitive programming side. Yeah, हाँ, so and we would have solved approximately like more than thousands of problems, right? हाँ, मतलब हमने तो बहुत ज़्यादा, वो बहुत एक्सटेंसिवली किया था, और Right. क्लासेस भी आई थिंक हमारी उस टाइम पे, बिकॉज़ एवरीथिंग वाज़ लाइव, तो 7-7 8-8 घंटे 9-9 घंटे I क्लासेस was उस going टाइम to चलती mention थी। this. तो आई एम नॉट श्योर उस टाइम पे तुम लोग मतलब, बट हाँ, एक मैं मानता हूँ कि अगर कोई अडॉप्ट कर जाए ना उस चीज़ को, कि हाँ, मैं बैठ के पढ़ना चाहता हूँ और मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मुझे पढ़ना है। उस टाइम तुम लोगों की Right. बस रीति है तो पढ़ना है, मैं पढ़ा दूँ। और हमारी साइड से था कि ठीक है चलो, अब डीएस से तो डीएस है, अब दबा के पढ़ो। राइट, तो अगर अभी अभी के प्रोस्पेक्टिव से मैं बोलूँ, डेफिनेटली अगर वो चांस फिर से मिले तो आई वुड लव टू डू दैट, आई वुड लव टू स्पेंड दोज आवर्स इन द क्लास. बट अगर तब के टाइम पे मेरे से कोई पूछे, नहीं भाई 3 घंटे से ऊपर क्लास. तो एवरी स्टूडेंट मेंटालिटी. So हाँ, you बिल्कुल। realize when you grow up, that's it. Yeah, तो that's the जैसे phase that everyone faces. अब ना मतलब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एज़ अ स्टूडेंट अगर मैं तुमसे पूछूँ, जैसे अगर इफ आई वुड हैव बीन अ सेकंड ईयर स्टूडेंट और थर्ड ईयर स्टूडेंट, और मेरे को ये होता कि मुझे मांग के लिए प्रिपेयर करना है, सबसे पहली चीज़ जो मैं चाहता कि भाई चलो डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना है, तो मैं क्या-क्या चीज़ें पढूँ, कितनी-कितनी चीज़ें पढूँ, और क्या जो मैं पढ़ने वाला हूँ, वो डेटा स्ट्रक्चर्स वाली चीज़ें उन कंपनीज़ के अंदर कितना काम आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी? क्योंकि
हमें पता नहीं होता जब तक हम टेस्ट नहीं देते कि Right, right, हमारे right. सामने क्या आने वाला है। और बिकॉज क्योंकि हमने कभी वो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं किया होता ना एनवायरनमेंट, जो Mhm. आप बैठते हो टेस्ट के लिए, ओए राउंड होता है, Right, टेक्निकल राउंड होता है, वो एक्सपीरियंस भी नहीं किया होता। जब तक एक्सपीरियंस नहीं Mhm. करते पता नहीं चलता। तो अब Right. वर्सेस देन अगर आप देखो कि भाई डेटा स्ट्रक्चर्स वाली चीज है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें मतलब आपको लगता है कि बहुत मतलब जरूरी रही, और कितना ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है फॉर अ मैंग लेवल कंपनी? Got it. So actually, this is a very good question. I would take it from the starting, so from the very beginning, from first year, first second year student को क्या करना चाहिए and all. So uh, like considering my situation when I was in first second year, like, we don't know, we had no clue what to do, what not to do. So I think it is still the same at some level, at some extent. It's still the same situation, specifically for tier 3 colleges. And I was surprised. I won't name the college name. It's one of the top Indian college. I was talking to one of the guy from there, and he was like, till second third year he didn't do anything related to competitive programming or data structures. Yeah, Okay. keeping this aside, coming back to the question, हाँ. yes. Um, so I think, so if we somehow be able to like uh, tell a first or second year student like uh, हम्म. the importance of data structure and all, and the importance of web development as well, and like how to give online assessments and how's the interview process of the companies, then I think the student will realize very very soon ki what is important for him, and how he should proceed. So right, so even if student know like data structure is important for them, still very less people know where to practice, what all questions to do. And so when you are a beginner, it's very hard for you to like just go on YouTube and start solving questions, go on lead code and start solving questions. Like you will be confused. You will just give up in 1 or 2 days, or maybe 1 week if you are हाँ. strong enough. So will always prefer, if you are a beginner, or even I was intermediate when I took the course. When you are a beginner, so uh, you should go with a course, and like the set of questions that coding blocks has is like they have a lot of questions, and it is so well arranged, like topic wise and also company wise, if I remember right. हाँ. तो जो Yes. हमारा So करियर बूट कैंप वाला उस टाइम पे पार्ट था, दैट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने तुम लोगों के yes. साथ लॉन्च किया था। सो इन दैट वी हैड दिस कि यार हमें इन बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है कि किसी भी कंपनी के अगर टेक राउंड में बैठ गए ना, तो इनको Mhm. सब कुछ आता हो, ऐसा कोई क्वेश्चन ना हो जो ये क्लियर ना कर पाए अगर इन्होंने देखा हो तो। तो उस Right, पॉइंट right, ऑफ right. व्यू से सो आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि भाई अगर किसी ने वो करिकुलम कर रखा है, तो ही वुड बी हैविंग इनफ कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं अब तो भाई सारी कंपनी फोड़ सकता हूँ, मेरे को कुछ भी ला दो, मेरे को कंपनी Right, का कोई डर वर नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली, मेरे को बढ़िया चल रहा है। right. तो अब जैसे Even डेटा from स्ट्रक्चर वाली चीज हमारी चलो ठीक है कि हमने एक डीएस से पढ़ लिया है। आई बिलीव कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूज, ट्रीज, ये टॉपिक्स तो सभी जानते हैं, सारी दुनिया right. के लोग इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब मैं Mhm. मानता हूँ कि ज्ञान देने वाले लोग ज्यादा हैं वर्सेस ज्ञान लेने वाले, क्योंकि जिन्हें Right. लेना है ना वो मतलब भाई सुन चुके हैं कि ये चीजें Mhm. करनी होती हैं, बस हमें पता है। अब मन Mhm. मन भी नहीं करता। तो जैसे तुम्हारे टाइम पे भी ऐसा होता होगा ना कि यार हमने जैसे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब मैं किसी कंपनी के अंदर बैठने जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट इनफ कि मेरे से वो कंपनी क्लियर होगी नहीं होगी। सो तुम्हारा Right, right. फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था जब तुम अमेज़न के टेस्ट में बैठे? क्योंकि क्वेश्चन आता है ना तो मन में होता है ना कि यार कहीं से कुछ हो जाए जिससे मैं चीटिंग कर लूं, अगर मेरे को क्वेश्चन आता हो, मेरा वे राउंड निकल जाए। तो तुम्हारे माइंड में भी ऐसा होता होगा। तो उस टाइम पे व्हाट वाज द स्टेट जब तुम अमेज़न के टेस्ट में बैठे थे, एंड हाउ मच, क्योंकि आई बिलीव कि तुम अब अमेज़न में जो लोग आते हैं उनके इंटरव्यूज वगैरह भी लेते ही होगे Mhm. या नहीं? Yes. तो अब अभी भी Yes, तुम yes. लेते हो, तो उस पर भी Ah, डीएस के बेस पे तुम जज करते होगे, या फिर right. किस तरीके से अमेज़न के अंदर हायरिंग का क्राइटेरिया सेट होता है बाय यू नाउ? और जब तुम कंपनी के अंदर बैठे थे, तो तुम्हारी क्या स्टेट थी? क्योंकि टेस्ट जो होता है वो क्लियर तो सबको करना पड़ता है।
यस। सो जब मैं पहली बार अमेज़न के टेस्ट में बैठा था, सो जो भी क्वेश्चंस आए थे, लाइक मोर और लेस दे वर वेरी सिमिलर टू व्हाट आई प्रैक्टिस्ड, लाइक, और आई वुड आल्सो से एग्जैक्टली सिमिलर टू व्हाट आई प्रैक्टिस्ड, एंड द क्वेश्चंस वर ऑन आई द रिमेम्बर तुमने मुझे एक बताया था हीप के, एक तो हीप के ऊपर यस, था, राइट, जो तुमने हाँ, मेरे को आके बताया था कि ये एक तो हीप का ही क्वेश्चन पूछा गया था। राइट, एंड मी एंड कार्तिक भैया वाज डिस्कसिंग इन द क्लास कि हाँ ये ऐसे ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे ऐसे होगा। हाँ 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 Yeah, I remember हाँ, that time. यस। And one of the questions was on array, and if I remember, so one was the rainwater harvesting, the most popular question, rainwater harvesting. So yes, and OE also consists of some behavioral questions which are very important for you. Like even if you score 100% in data structures, the problem solving part, still there are 50% of the chances that you can miss out on behavioral questions, which happened to मतलब me अगर as well. So बिहेवियरल राउंड नहीं निकला, ऑल्दो आपने अमेज़न के सारे कोडिंग के क्वेश्चन फोड़ दिए, तो यू आर no, रिजेक्टेड। no, no, not round, not round. So OA के अंदर there are two sections. It used to be, so there are two sections. Ki one problem solving, and the second one is behavioral questions. Like ki, you would be given a situation, and you would select ki what maximum you would do, what minimum you would do. So it's not, you don't have any accurate answer for that. It's just judge your thinking ability, judge you from the behavior perspective. Yeah, so it happened with me, like 50% of time, 50% of the time people tend to lose because of the behavioral round, behavioral part of the OA. ओके, तो Yeah, तुम्हें क्या लगता है? मतलब मेरे को लगता है कि अमेज़न की साइट पे जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो सबको टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं के रिलेटेड वो जनरली क्वेश्चंस होते हैं। right, those are very important. Actually, I was having few conversations with my colleagues, and we were talking ki specifically to Amazon, like people live with those principles. You don't have to grind those principles, और कि ये कहीं नहीं कि बस एक लिखा हुआ है और बस लोग पढ़ के छोड़ रहे हैं या कोई मैंडेटरी कर रहा है इसको लगाओ. Like whenever हाँ, you will talk to anyone within the team or within Amazon, you would see that that person has that principles that Amazon has. So one of the most common is you take the ownership. Everyone is a owner here. So that's the best thing about Amazon that I like. हाँ, So, and talking about the what was my situation when I was giving the interview? Yes, someone sent me. I think the HR only sent me the PDF of the STAR principle, the STAR approach. So, and also you have to at least know what all principles are there for Amazon. So ओके। I think those will help you in interview, because an interviewer judge you within those principles only. Ki, does this person have ownership, has bias for action and all. So, तो जैसे अब अमेज़न में हम लोग पहुंच गए, लेट्स से, है ना? तो अब अमेज़न में पहुंचने के बाद वर्सेस बिफोर यू वर इन अमेज़न, आपको क्या दिखता है कि यार अमेज़न के अंदर ना ये चीज तो बहुत बढ़िया है, अगर कोई भी इसमें आना चाहता है या फिर mm, कोई भी इसके लिए अगर प्रिपेयर करता है, तो इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। तो ऐसे कौन से पर्क्स होते हैं अमेज़न में जाने के बाद, स्पेशली व्हेन यू बिकम एसडी2? तो कुछ लिखता है कि अपार्ट फ्रॉम मनी, मॉनेटरी तो ऑफ कोर्स yeah, रहता ही right, है, right. We won't वो talk तो होगा about ही that. होगा, मतलब you'll have वो Yeah. पैकेज वैकेज तो हम रिलीज नहीं करने वाले, अगर यहाँ पे तुम लोग पूछोगे भी तो भी। बट हाँ, तो पर्क्स वगैरह क्या रहते हैं अमेज़न के अंदर इफ यू बिकम एसडी2? और एसडी2 पे जाने के लिए टिपिकली कितना टाइम जनरली लग जाता है? um, so starting from the last question कि कितना टाइम लग जाता है जनरली SD2 पे जाने के लिए. तो what average I have observed at Amazon is generally people tend to take on an average 2 years, like ओके, 2 साल on an average लेते हैं. And there are also exceptional cases जो 9 महीने में I've seen people getting promoted in 9 months. And ओके, so there are people getting promoted after 3 years as well. So ओके। I asked someone within the company कि like इतनी जल्दी हो सकता है क्या प्रमोशन, या इतना डिले क्यों हो रहा है. So the leader tends to make that person, portray that person as a role model for the team, like to break the myth that हाँ तुम्हें 2 साल ही लगेंगे प्रमोट होने में, तुम इससे पहले नहीं हो सकते. So to break that ice, that our leader generally like present the person who is getting promoted as a role model to the team, as, to basically set him as an example for the team.
and which motivates other people, like by default कि वो सब सारे मोटिवेट हो जाते हैं. आई हैव ऑब्जर्व दिस. ओके। और जनरली पर्क्स वगैरह जो तुम्हें लगता है कि भाई अमेज़न में तो ये बेस्ट चीज़ है, मैं अमेज़न में आया, ये बढ़िया है। Okay, so maybe students might not be able to relate with this, but I am sure like the people who are currently working or have some experience will relate with this. So, first of all, Amazon is a brand name. Amazon has a very good reputation all across the job market. So that's one very big perk. People tend to respect you more, and and also the you remember we just talked about the leadership principles. Those are like by far the best thing that I have seen in Amazon. Like they just drastically change your personality, the way you talk, the way you think, the way you take tasks, the way you work. Everything is like drastically changed in a very positive way. And rest of the perks are you get freedom. So ओके, uh, like sometimes it depends on the manager. The perks and all right now the work from home and work from office policy. So currently the mandatory is 3 days per week, but still we can have flexibility around those days as well. And yes, you are on your own. You have to take the like you have to decide what you want to do. You have हुँ, to decide your own career, and your manager will guide you so well. Like you have like very good processes established in Amazon to let you grow. So ओके, and more perks, there are many perks. And like the office is very beautiful. ओके। तो मतलब वो तो 5 Specifically स्टार, the Hyderabad. 7 स्टार होटल टाइप लगता होगा तुम्हें कि ऑफिस तो आया नहीं, होटल में आ गया हूँ। राइट, एक्चुअली जब मैं स्टार्टिंग में शुरू किया था जाना, तो मैं ऑफिस से घर नहीं आता था. अच्छा। ओके, सही है, नाइस। हाँ, यस. वो तो होता है ना जब एकदम घर से बाहर निकलते हो, नॉर्मल घर, कॉलेज या कहीं इधर-उधर जाते हो, हाँ, और एकदम से इतनी बड़ी बिल्डिंग में आते हो, सब कुछ लाइक एकदम अच्छे से रखा हुआ है, एकदम साफ-सफाई, तो लगता हाँ, है कि हाँ, अच्छी जगह आए हैं. हाँ, ट्रू। तो व्हाट आई एम एबल टू गेट फ्रॉम इट इज, पहले तो वर्क एनवायरनमेंट इज वेरी गुड, आपको दिखेगा यस, कि यहाँ दैट पे है इज़ वो फॉर चीज श्योर. कि हमें काम करना है। दूसरा, मेंटोर इज देयर, आपको जो गाइड कर सकता है। लर्निंग इज ड्रास्टिकली, मतलब बहुत ज्यादा, जो वर्सेस राइट, आपको पहले आता है और जब आप एंटर करके सीखते हो। एंड राइट. उसके बाद यू हैव द लीडरशिप थिंग कि हाँ, But there is यू one कैन more thing. टेक One ओनरशिप more. ऑफ थिंग्स एंड यू कैन डू थिंग्स ऑन योर ओन। There is one more thing I would like to mention. There are few companies that जो टाइम नहीं देती एम्प्लॉय को कुछ सीखने के लिए, बट Amazon is not one of them. They give you ओके, plenty of time to research, to like try out new technologies. Like myself, I'm talking about myself. I've worked on like more than 5 to 6 languages, more 5 to 6 tech stacks, and it's totally on me. I take my projects, I decide my like uh, the tech stack and all. There can be some limitations depending on the team where your team only works on the particular tech stack. So I'm not talking about them. So yeah. ओके, ओके। तो ठीक है, तो मतलब अगेन लर्निंग का पाथ क्या रखना है, दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन डिसाइड। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई थोप रहा है भाई यही सीखो, यही पढ़ना Exactly. पड़ेगा। Exactly. वो यू आर इंडिपेंडेंट एंड यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। तो ये तो Right. बढ़िया है। तो एक एक छोटा इसका क्वेश्चन है रजत का। तो हाउ एक्सटेंसिवली शुड आई डू डीएसए फॉर मैंग नाउअडेज? तो मतलब आई वुड से कि भाई डेटा स्ट्रक्चर्स ना देखो, जो गलती लोग करते हैं आई वुड से कि यार तुम जाते हो, अलग अलग वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट तो पूरी हो चुकी हैं, मतलब तुम जाओगे Mm. कोडिंग ब्लॉक की साइट पे, तुम लीड कोड पे जाओगे, तुम कोड फोर्सेस पे जाओगे, तुम कोड शेफ पे जाओगे, उधर ना टॉपिक वाइज यू गेट स्टक विद द एरे पार्ट। और तुम ऑफ Right. कोर्स कॉन्फिडेंस चाहिए होता है थोड़ा, तो थोड़ा ट्राई करोगे इजी क्वेश्चंस करो। इजी क्वेश्चंस के बाद यू फील कि चलो यार एक दो मीडियम ट्राई करता हूँ, वो नहीं होते तो फिर आदमी नहीं बोलता चलो होते. इजी पे मैं स्टक रहता हूँ और इसी पे करते रहता हूँ। ये ना टाइम वेस्टेज होती है। तो Mm. करना क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर जाके तुम्हें टॉपिक्स इन डेप्थ कंसिडर करने हैं, कौन कौन से हर एक के अंदर होते हैं, फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चन करो। क्योंकि क्वेश्चन करने वाले जो तुम हो वर्सेस जो पूछने वाले हैं, उन्होंने भी वही पढ़ा है जो तुम पढ़ रहे हो, और वो भी वही पूछेंगे जो उनको आता था अपने टाइम में वर्सेस तुम जो अभी पढ़ रहे हो। तो वो मोर और Right. लेस सेम रहता है, तो इतना ज्यादा नहीं होता।
हाँ, डेटा स्ट्रक्चर्स का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आउट ऑफ टच ना हो जाओ, कंसिस्टेंट रहो, दैट इज समथिंग व्हिच रियली हेल्प्स। तो व्हाट डू यू थिंक आदित्य, जो मैं बोल रहा हूँ इसमें, इफ यू लाइक टू ऐड समथिंग? Right. One small thing ki I think at the time when I was preparing or uh, for like different companies for interviews and all, so I think that at that time the level was like just like below like just a little low level. And these days the companies have raised their bar. Like, so suppose if at that time the level was x, right now it is like 1.5x. And there is a very good reason for this, because recently we saw some corrections happening in the market. There were like mass layoffs by many of the companies. So all the talented folks, all the talented pool of people are already in the market. So the competition is really high, so company needs something to shortlist among them, to decide among which is the right candidate for them. So to do so, maybe I think like the bar has increased slightly. The level of DSA questions, the level of questions that company has increased a bit. वो पॉइंट इज, मतलब जो मैं देखता आया हूँ, बिकॉज मैं तब से देख रहा हूँ जब सिर्फ ट्रीज पढ़ के यू यूज Right. टू गेट इनटू अमेजोन, वर्सेस अब Mm-hmm. ट्रीज पढ़ के अमेजोन अगर निकल जाए तो मतलब तुम कतई लकी हो, मतलब ऐसी किस्मत लेके पैदा हुए हो तुम जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो अब हुआ क्या Right. कि कोविड के अंदर आई फील कि लोगों ने ना, इंडिया के अंदर ये होता है कि जुगाड़ निकालना है, पढ़ने का नहीं। Mm. किसी भी कंपनी में घुसना है तो जुगाड़ चाहिए, जुगाड़ के थ्रू घुसा दो, हम घुसने को रेडी हैं। तो अब फेक Mm. प्रोफाइल्स बाय करना, फिर चीटिंग करना, फिर चीटिंग करने के बाद कंपनी के ओए राउंड्स में चीट करना, तुम्हारे पेपर तुम बढ़िया से चीटिंग करके पास कर गए, इंटरव्यू भी बढ़िया से चीटिंग करके पास कर गए, तो बंदा देखता है वाह इतना टैलेंटेड पूल अभी तक कहाँ था, कोविड में कैसे निकला है बार। तो उस चक्कर Mm. में उन्होंने बोला कि अब एक काम करते हैं, टेस्ट को इतना मुश्किल कर देते हैं जिसको नहीं आता वो कर ही ना पाए, और Right. प्लेगरिज्म इस तरीके से रख लेते हैं कि गूगल पे सर्च करके भी ना मिले। तो इस Right. वजह से ये करना पड़ा मजबूरी में। Mm. Yes. दिस इज समथिंग व्हाट आई फील। बाकी तुम अमेज़न में ही थे जब कोविड का टाइम चल रहा था, Mm-hmm. तो तुम्हें क्या लगा? ऐसी डिस्कशन होती थी अमेज़न के अंदर, भाई वो मुश्किल बना दे, ये तो चीटिंग हो रही है बहुत ज्यादा, बचा बचा। नहीं, एक्चुअली हमारे हाथ में नहीं होता है। The OA part. Interview ओके। is on in our hands, but OA is not in our hand. And also, this is not a very good approach कि जुगाड़ लगा लिया, ये वो कर लिया, because anyways think of it, like think of situation कि हाँ सब कुछ कर लिया, ऐसे कर लिया, बहुत अच्छा जुगाड़ लगा लिया, get into a company, but you will be with the people who have actually cleared that bar. The thinking won't match, like there will be differences if you are going through some jugaad and all, so आई थिंक there तुम्हारे you will miss out. इंटरनेट में इशू हो रहा है देता है, आई थिंक तुम्हारी uh, बारिश की वजह से। बैंगलोर में भी बारिश हो रही है, दिल्ली में तो दबा के बारिश हो रही है। ओ अच्छा, ऐसा है क्या? आई एम नॉट श्योर, मैं बाहर देख नहीं सकता अभी। हाँ, थोड़ा सा नेट हाँ। लैग कर रहा है, एक बार बाकी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो बता दो, हो सकता है मेरा भी लैग कर रहा हो, आई एम नॉट श्योर। हाँ, आई थिंक अब इट इज फाइन, अब तुम Okay, so is am I नॉट यू। audible? हाँ, आप Not yet. ऑडिबल तो हो, वीडियो लैग कर रही है। Okay. um सब अच्छा चल रहा सब है, अच्छा चलो सब अच्छा चल रहा है तो बढ़िया है फिर तो। okay. अच्छा, तो जैसे अब देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट एज अ स्टूडेंट, मतलब अगर मेरे को कोई एक ऐसा सेशन में अटेंड करने को बोलता वेयर समवन हु इज SG2 फ्रॉम Amazon इज कमिंग, और Hmm. मैं उससे पूछना चाहता कुछ चीज ना, तो मेरा ऑफ कोर्स होता कि मुझे भी सीखनी है चीजें भाई जो तुमने सीखी थी। तो जैसे करियर बूट कैंप तुमने ज्वाइन करा था, या फिर उसको Hmm. हम ISA प्रोग्राम बोलते थे, नाउ दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड एज करियर बूट कैंप प्रोग्राम। तो Right, right, right. उसके अंदर वर्स उसके अंदर तुम्हें क्या लगा कि मतलब भाई उसको सीख के जिसको कुछ नहीं आता या जिसको कुछ आता है वो इस लेवल का प्रिपेयर एक्शन में कभी हो भी सकता है कि भाई एक वो मैंग लेवल की कंपनी निकाल सके या कोई स्टार्टअप निकाल सके। मैं ज्यादा नहीं बोलता, मैं 50-60 लाख की बात ही नहीं करता, 50-60 लाख Hmm. इज नॉट समथिंग जो सबको मिल सकता हो। Yes, yes. हम बात करते 20 हैं or some 20 base or 12 लाख, 15 to 15 20 लाख, is. Hmm. हाँ मतलब 12-15 लाख की बात कर लेते हैं, क्योंकि लौंडे तो भाई उसमें भी खुश हैं कि इनिशियली हमारे Actually वो कॉलेज में भी बहुत लोग बड़ी बोल बात दिए है। थे। हाँ,
तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग? लगता है कि भाई हाँ हो सकता है, या नहीं लगता कि मतलब नहीं भाई वो मैंने पढ़ने का था, उसके बाद मैंने अपनी पूरी ऐसी तैसी कराई, वो तो ऑफ कोर्स थी, तो क्या सीन था उसमें? So when I was doing the course, so luckily I had very good batchmates. I am still in touch with those batchmates, and every one of them is at very good company, very good position, earning a lot. so, when you do such kind of course, it's not only key you get a very good content, you get to build a community, a very good community, and a very good network, and you can stay consistent while doing the course. There is like positive competition, you can say, among the peers, ki who knows better, like, in a very positive way, not in a competitive manner. And yeah, at that time the number of questions that we solved, we also gave mock interviews, mock tests, in which we were given a very clear picture of what happens within the company. And trust me, that is something which exactly happens at any interview of the company. um Right. So I think because of this, it gave me a very good like very good level of confidence to attend the interview. I remember Jaspe was my first interview, and the interview went for like 2.5 hours. I don't know what all he asked, and that was a very good interview. Like I cleared it. That's why it ओके, was good. Yeah, that was my first interview, and everything went very smoothly. ओके। आपकी आवाज शायद रुक रही है। Um, Hello. मैं अपना जितने वीडियो लोग स्विच हमें ऑफ देख करूँ रहे हैं, क्या? एक बार प्लीज बताओगे कि इज एवरीथिंग फाइन, और इज इट नॉट, मतलब ऐसा ना हो हम सेशन कर रहे हैं और आप लोग सुन ही नहीं पा रहे हो, वो भी वी डोंट वांट। राइट। एक्चुअली मेरे को आपकी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है। आपकी वीडियो लैग कर रही है मेरे को, इसलिए आई एम नॉट श्योर। ओके, मैं एक बार स्पीड चेक ही कर लेता हूँ ना। मैं भी कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे बारिश हो रही है, प्रॉब्ली हो सकता है कि इशू हो। हुँ, बट ओके, तो आप लोग बाकी जितने भी हैं दे कैन आस्क क्वेश्चंस। तो अब जैसे यू सेड कि हाँ ये वाली चीज होती है, और जैसे उसके अंदर जो, देखो मतलब मेन मैं मानता हूँ कि इट्स नॉट जस्ट कि आप फैन क्रैक करना चाहते हो तो आप कंटेंट पढ़ लो, बट इट इज द वे दैट यू हैव टू स्टडी, कि भाई आपको एक पर्टिकुलर चीज ये पहले करनी पड़ेगी, अगर इसके पहले कुछ और पढ़ा वो आपको नहीं समझ आएगा और आप खिचड़ी बना लोगे पूरी की पूरी ना, और आप एट दी हुँ, एंड इस तरीके से खड़े हो गए कि आपको पढ़ा सब कुछ है, आता कुछ नहीं। तो ये सबसे ज्यादा राइट, मेजर इशू होता है लोगों के साथ ना। सो तुमने इस चीज को कैसे कैटर करा था कि जो तुमने पढ़ा वो तुम भूलो ना, तुम रिवाइज रखो, तुम चीजों को प्रैक्टिस में रखो, और हाउ डिड यू यूज टू, स्ट्रैटेजी क्या थी पढ़ने की ना? राइट। सो कमिंग टू वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि सब खिचड़ी पका देते हैं। So actually, this is actually right. So sometimes I've seen people like just hopping on like this hopping on to the problem solving part and not understanding the basic language fundamentals. Let it be C++ or Java or something. So people, like many people lack those fundamentals. So you should always start with them. You have no idea how much it will help you in problem solving or solving any problem or submitting a solution. And then you should always start from array, because array is like a neve of data structure. Every other data structure is somewhat built on array. So starting ट्रू। from there, and then significant, like slightly keep on increasing our level. And coming to second question, how I started. So after coming back from Delhi for from my course, I started re-revising everything. I started watching videos like at a 2x speed, and I started making notes of it, more in-depth notes, and started solving questions. Also, uh, I would make a note
of the algorithm that I used while solving a problem. Later, I'll come on to it, ki how it helped me. Let's just for now leave it here. And then I started solving problems on Geeks for Geeks, and then I started taking participation, like live participation in the contests which used to happen on Code Chef or Code Forces. And yes, so this is how I used to study. And coming to how, where we left for the last trail that we left. Um, so no, making notes is one of the most important thing that you can do, like, and the most helpful thing that you can do for yourself. बिल्कुल Because your handwritten notes are something that you wrote, you understood, it's your understanding. So when you will just read them, even after 1 or 2 months, you will know कि हाँ ये इसलिए मैंने लिखा है, ये ऐसे चल रहा है. You will like have a very deep understanding of that solution. Let me tell you how I used to do that. So it was advice from one of my very good friends. So the it was like so when you start giving contests or start participating in contests and different competitive platforms, you know that there are some very popular questions or जिसके सिमिलर और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं. I'll take example of, let's say, minip maxip, or let's say, to be on a easier side, rainwater harvesting is one of the most common questions, and few questions are built around it as well, and very widely asked in interviews. So I used to make a note key, just the algorithm. I used to scribble on my notebook, and like क्या क्या core concepts है. I just used to write code, or even in English language, the algorithm basically. So I kept doing it for a very long time, like 2 3 months passed by. I was preparing for interview, just for interview perspective. So the notebook became of like 30 or 40 pages. I also ओके added all the questions that were asked from me in the interviews. So ओके when so when I used to have one more interview of some other company, I just used to scroll the not pages and all. I used to get everything, and like 90% of the times, at least one of the question used to come in that interview. That was very helpful, and also it helps you to clear your thought process, clear your understanding of particular concept, because when you write you remember more and you understand more when you write. ओके तो एक क्वेश्चन है मतलब काफी इंटरेस्टिंग है कि यार अगर हमारे बीच में ईयर गैप है तो हम फेक एक्सपीरियंस डाल दें या हम क्या करें मतलब वैसे कमाल का है बट मैं बोलूंगा फेक एक्सपीरियंस डालोगे ना तो ये तो आत्महत्या करने वाली चीज होती है क्योंकि वो तुमसे पूछेगा Right. क्या किया तुम बोलोगे मैंने ये किया वो पूछेगा कैसे तुम बोलोगे वो नहीं पता फेक Hmm. एक्सपीरियंस डाल दिया तो मरने वाली चीज है उससे अच्छा बता दो भाई मेरे कॉलेज में कंपनी नहीं आती थी या फलाना ढिमकाना रीजन की वजह से मैं इस वजह से नहीं कर पाया मैं प्रिपेयर कर रहा था या जो भी कर रहा था दैट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू Right. अगर फेक एक्सपीरियंस डाल रहे हो तो ऐसे डालना पकड़े ना जाओ क्योंकि इसमें पकड़े जाने का बहुत हाई चांस होता है पकड़े ही जाओगे बोलेगा गिटहब की रेपो दिखाओ कहाँ करते थे कोड गिटहब चलाना आता ही नहीं कुछ क्योंकि कभी किया ही Right. नहीं काम तो वहीं मर जाओगे तुम तो I would very strongly disagree with Dhruv कि ऐसा नहीं करना है. Background checks are there in every company, वहां पकड़े जाओगे. It's very very like it's extremely fine to ask HR, to tell HR the truth कि हाँ this was my situation, and most of the times the HR will understand. He or she is also a human being, and he or she knows the reality. तो एक बहुत ही बढ़िया चीज है भाई डीएस और सीपी चाहिए और क्योंकि हर प्रोजेक्ट में तो गूगल ट्यूटोरियल और स्टैक ओवरफ्लो यूज हो रहा होता है तो मैं क्यों करूं I told you कि there's a lot of talent pool right now in the market. Pe- Companies want some criteria. It's something like aptitude. If you know, like the logical, basically data structure tests your logical thinking. If you have a very good logical thinking, 99% percent of the chances you will be able to write a very good code. So yes, people do copy from Stack Overflow, they do use some external tools, but those tools are
to make the life of developer easy, and you will only be able to understand them when you know the basic concepts. And I think I missed something in that स- question. सही Coming to the first question, yeah, I think it was yes, DSA CP, data structure and competitive programming is important for the companies, and most of the companies, even those are not on MAANG level, they ask like, let it be easy or medium, but they do ask the like data DSA question in their interview rounds. तो मैं इस पे बोलूंगा भाई, देखो अगर तुम्हें कंपनी में सिलेक्ट होना है ना, तो होता क्या है कि तुम इंडिया में बैठे हो, इंडिया में इतने सारे इंजीनियर्स है ना, सब बोलते हैं कि हमें आती है चीजें। अब उनको Hmm. शॉर्टलिस्ट करने का कोई क्राइटेरिया है नहीं, तो शॉर्टलिस्ट करने के लिए क्या करें, उनका एक लॉजिकल टेस्ट करा दो, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं जिस पर तुम जज किए जा सको। Right. कैसे पता लगाएंगे? वो प्रोजेक्ट्स तो तुम्हें दे नहीं सकते कि वेब के बना के दो, हम चेक करेंगे मैनुअली, Hmm. क्योंकि मतलब अगर मेरे पास 50,000 बच्चा भी आ गया, तो मैं कैसे चेक करूं कि हर एक के प्रोजेक्ट क्या हैं, कैसे हैं? तो तुम गए, तो इसलिए डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, और क्योंकि टफ क्वेश्चंस करने होते हैं, तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज मोर और लेस टुवर्ड्स मैथमेटिक्स, नंबर थ्योरी, Right. कॉम्बिनेटोरिक्स, Right. बर्थ पैराडॉक्स की प्रॉब्लम्स, Hmm. आपके रेंज की क्वेरीज का काम, तो वो सारी चीजें जब आती हैं तो दैट इज सीपी, तो वो भी आना जरूरी है। तो अब किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है, आई फील दैट ये मेरे से पूछ रहे हो आप लोग, कोडिंग ब्लॉक सिर्फ फ्रेशर ट्रेनिंग देता है या एज का कोई मसला है, व्हाट्स एज लिमिट? तो जैसे अभी आदित्य ने बताया कि भाई जो इनके बैच के साथ के सारे स्टूडेंट्स थे, तो आई थिंक काफी सारे शेयर चैट में गए, अमेजोन में गए, फ्लिपकार्ट में गए, जो फर्स्ट बैच था उसके स्टूडेंट्स इस तरह से गए। तो जोमेटो में कौस्तुभ गया था उस टाइम पे, उसका Hmm. शायद अभी भी हमने ब्लैक हॉक इंटरव्यू। नेटवर्क्स में भी गए हैं। मेरा नेटवर्क जा रहा है? आई थिंक मेरे एंड पे प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैं मोबाइल के इंटरनेट से कनेक्ट किया हूँ। एक्चुअली मैं आई एम सिटिंग रियली फार फ्रॉम वाईफाई। अच्छा, तो आई वुड से नहीं, फ्रेशर्स वेशर्स का कुछ नहीं होता। ये वैसे ना हम दोनों नहीं बता पाएंगे किसके नेट में इशू है, ये तो स्टूडेंट्स ही बता पाएंगे जो अभी देख रहे हैं। राइट। तो जितने भी यहाँ बैठे हो, तो एक बार आप लोग बता दो कि किस में है, ताकि वी कैन सॉर्ट इट आउट, तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ जुगाड़ कर लेंगे। तो देखो, कोई फ्रेशर ट्रेनिंग में एज का मसला नहीं होता। अगर आपका 1 साल 2 साल का गैप भी है और आप जो चीजें पढ़ते हो, तो जैसे जो करियर बूट कैंप होता है, वो स्पेसिफिकली बनाए इसलिए गया है कि भाई जिसका कुछ नहीं हो पा रहा, वो आए, वो ट्रेनिंग ले। वो एक बहुत अच्छी जगह, जिसपे हम बोलते हैं 12 लाख के पैकेज पे चला जाए, जहां पे उसके पास कुछ भी नहीं है करंटली हाथ में। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज द मोटिव ऑफ हैविंग दिस करियर बूट कैंप इन प्लेस। सो अब इसके अंदर, बिकॉज आदित्य इज वन ऑफ द पीपल जो इस बैच के अंदर थे, तो दैट्स व्हाई ही इज समवन जो बता सकता है स्टूडेंट पर्सपेक्टिव कि वो बैच कितना फायदेमंद था या कितना फायदेमंद नहीं था। Right. I think if I give one example, to it would best explain the situation, the whole situation. So there was one person, one girl in my batch, and she was working for Tech Mahindra, I guess, on 3 or 5 LPA package. She did the course and was consistent everywhere. And later she switched to I don't remember the company name. I don't remember the first switch. The last switch was Qualcomm. Like from first and last, I mean within 1 month. So like you are negotiating with the companies and raising the package and all. So she got placed in Qualcomm with a very high package. I think that situation, that example explains the situation. हाँ ट्रू, 5 साल का गैप हो तब भी प्लेस हो सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हो ही जाओगे, बट हाँ, टू स्टार्ट विद तुम किसी स्टार्टअप से स्टार्ट कर सकते हो आराम से। Hmm. गैप नहीं Yes. मैटर करेगा, आपके डेवलपमेंट स्किल्स ज्यादा मैटर करेंगे, क्योंकि स्टार्टअप में जाना है। तो बाकी क्योंकि आदित्य भी अब काफी इंडस्ट्री के अंदर देख चुके हैं लोगों को, रेफरल्स के लिए लोग तुम्हारे पास भी काफी ज्यादा आते होंगे। तो व्हाट डू यू Right. थिंक, 5 साल एक्सपीरियंस गैप को फैंग कंपनीज या मांग कंपनीज रेकमेंड करती हैं अपने लिए या नहीं करती, या स्टार्टअप्स रेकमेंड करते हैं, तो उनकी क्या सिचुएशन होती है एज समवन हु इज इंटरव्यूइंग अ कैंडिडेट फ्रॉम Amazon? Um, I won't be able to talk with respect to Amazon specifically or any FANG ओके, company. So actually, like basically, MNCs are little more strict than startups. They do background verification
if you have a gap, it somehow gives them a red flag that why this person has a gap. There are also the same MNCs also have some programs like back to work or some, I don't remember the name of the programs, but yes, those programs are specific to the individuals who took break from their career, like 5 6 years of break. तो ऐसे programs भी होते हैं. Now MNCs won't be the best place if you have like 5 years of experience or 5 years of gap. It can be iffy situation, but definitely startups will give you a shot. Getting into a startup solely depends on your skills, like let it be development skills or competitive programming skills. Like majority of the times it's a mix of both. So I know people uh, who were working on their startup, and later they tried for some other companies and startups, and they were able to crack them, they were able to get into them, and they mentioned the genuine reason like why they have this much of cap. So and yes, so if they got accepted, then definitely I think it's okay. Even if you have 5 years of cap, you still can land a job at a good place. I'm not talking about like very small startups or companies. अच्छा तो मतलब आई वोंट रिकमेंड कि यार तुम फेक एक्सपीरियंस बना बना के डालो. मतलब डालने को तो तुम डाल दो, टेस्ला में वर्क करा है, फेक एक्सपीरियंस दिखा देना, फेक सर्टिफिकेट, ये लो भाई मेरा सर्टिफिकेट, मैं तो एलॉन मस्क के साथ ही था, मैं उसी का हाथ बटा रहा था, वो जब ट्विटर का कांड चल रहा था ना उधर ही मैं मौजूद था, उसके साथ में ही गाली गलौज करता था तो मैं भी वहीं बैठता था. बड़ा मतलब टफ टाइम था उसके लिए. वो तो मरोगे ही भाई तुम, ऐसा नहीं हो सकता. देखो फेक एक्सपीरियंस तो Hmm. बेटर है तुम ये बता दो कि मैंने स्किल्स गेन करे, मेरे पास थे ही नहीं. हाँ मतलब अगेन दिस इज समथिंग विच यू हैव टू डिसाइड कि तुम डाल रहे हो तो बता भी पाओगे या नहीं बता पाओगे. Hmm. अगर मेजर एक्सपीरियंस वही है जो तुम्हारा फेक है तो तुम गए. अगर Hmm. उसके अलावा और चीजें हैं और थोड़ा बहुत फेक डाल रहे हो तो हो सकता है निकल जाओ कहीं से बच बचा के. बट फैंग कंपनीज आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगी, वहां फंस जाओगे तो फिर क्या एमएनसीज करोगे. में फंस जाओगे. एमएनसीज में तो डेफिनेटली फंस जाओगे. हाँ तो इट्स बेटर कि भाई तुम सच डाल दो rather देन तुम ऐसी चीजें डालो जिसमें तुम फंस जाओ, टेक्नोलॉजी भी तुम्हें ना आती हो. हम्म. तो आदित्य जैसे अब ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट, तो आई होप कि स्टूडेंट्स को काफी चीजें पता चलेंगी. तो अब एक मैं चीज मानता हूँ कि जब भी एक स्टूडेंट पढ़ने बैठता है चीजों को, तो अर्ली स्टार्ट ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है. जैसे कि फर्स्ट ईयर में राइट. या फिर अगर वो फोर्थ यस. ईयर में है तो उसको चीजें करनी है बट लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर करना बहुत जरूरी है. तो जैसे सबसे जरूरी चीज आई बिलीव डेटा स्ट्रक्चर्स तो मस्ट है, बैकबोन है फॉर एनीथिंग यू वांट टू लर्न, राइट. एनी राइट. राइट. टेक्नोलॉजी यस. यू वांट टू लर्न. फिर डेवलपमेंट वाला पार्ट बहुत ज्यादा आ जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो तुम्हारा भी होता होगा ना मन की मैं रेज्यूमे में राइट. डालूं ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसके हाँ, बेसिस पे रिज्यूमे मेरा खाली तो रेज्यूमे नहीं शॉर्टलिस्ट छोड़ोगे. हो पाए. हम्म. हाँ, जिसके बेसिस पे मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो पाए. तो बंदे कॉपी मारने की सोच लेते हैं. जैसे ये फेक राइट. एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, हाँ, वेब के प्रोजेक्ट्स की प्रोजेक्ट्स कॉपी कॉपी करने मार. की सोच लेते हैं. तो व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस कि भाई जो एक फोर्थ ईयर का स्टूडेंट है उसको अगर ये प्रोग्रामिंग वाली चीजें, क्योंकि डर तो लगता है यार हम लेट हो गए, हमने अभी यस. तक पढ़ना था, हमने कुछ नहीं पढ़ा, लग चुकी राइट. है, राइट. राइट. बीटी हो गई है, अब यस. तो मतलब ना अब कुछ बचा नहीं यस. हाथ में, अब तो जो होगा देखा जाएगा. तो व्हाट डू यू थिंक अ फोर्थ ईयर स्टूडेंट शुड एक्चुअली डू इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट, जैसे तुमने जस्ट पे निकाली पहली कंपनी, तो दैट इज समथिंग हम्म. व्हिच इज रियली टफ, क्योंकि वो पूछती ग्राफ है, 3 क्वेश्चन हम्म. पूछती है ग्राफ के, पहला राइट. टोपोलॉजिकल और दूसरा बीएफएस, तीसरा डीएफएस ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है उनका. तो हम्म. तुम्हें क्या लगता है फोर्थ ईयर स्टूडेंट को, बिकॉज तुम भी उसी स्टेट में थे, राइट. एक्चुअल में तुम उसी स्टेट में थे जहां पे तुम्हें लगता था कि भाई क्या होगा कैसे करेंगे, तो व्हाट डू यू हम्म. थिंक अ फोर्थ ईयर स्टूडेंट शुड डू इन टर्म्स ऑफ मेकिंग देयर करियर अ सक्सेस, और Okay. थर्ड ईयर स्टूडेंट. And I'm considering if he didn't do much in the first to third year of his college life. हाँ. Okay. So is actually that's a very good point. I have talked to many people, many students who ask me ki, and even my batchmates were there in my college time. They used to say कि अगर इस कंपनी में नहीं लगी तो मैं जॉब ही नहीं कर रहा हूँ. I am not like going to work इतने से below package पे. Never do this.
like Okay. it's never ever do this. इसमें तुम्हारा gap आता है. Anyways, if even if you are working for a small company, you get to learn many things for of corporate life, which is actually very new to you when you just get out of the college. Like the freedom that you get when you have your own money, it's a very beautiful experience. And yes, True. coming back कि तो ये चॉइस कभी मत लेना कि अगर इस कंपनी में नहीं लग रहा तो मैं जॉब ही नहीं कर रहा हूँ. You have to do something. The job is very important. उसके बीच में you can keep on studying, like buy out some time, either like play smartly, and keep working on your skills, keep on applying, keep on talking to people, keep on networking. Networking is a very very good like like fundamental of getting interviews or referrals. Networking is very important. True. uh, so yes, I think वो decision तो मत लेना, but हाँ, now once you made this choice कि हाँ you have started working for some company, some normal company. There were my friends who were working for them. They skilled up. They like studied really hard and like built their skill set, and later they were able to crack the jobs of like high paying MNCs and all. Also, I had many people in our own batch who were like 2020 pass outs or 2019 pass outs. They were able to land a very good job. So तो yes. इन शॉर्ट जो तुम लोगों ने चीजें पढ़ी थी, दैट इज हेल्पफुल फॉर अ फ्रेशर एज वेल एज समवन जो एक Right. साल 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस्ड है और उसको चीजें सीखनी है. मतलब मेन Yes. मोटिव जो हम भी सोचते हैं कि अगर कोई आ रहा है ना, तो वो इतना रेडी हो जाए कि इंडस्ट्री के अंदर जो 3 4 साल एक्सपीरियंस के लोग हैं उसको उतना आता हो एटलीस्ट ना. मतलब आई एम नॉट गोइंग टू से कि सब कुछ प्रैक्टिकली नॉलेज उसको हो जाएगी. अमेजोन के अंदर लार्ज स्केलेबल एप्स किस तरीके से वर्क करती Yeah, हैं, that बट is not एंट्री the goal. लेवल तो उसका Yes. पूरा हो जाएगा. Right. Yes. एक मेरे लिए भी क्वेश्चन आया. आई थिंक कार्तिक, डू यू गाइस टीच डॉकर और क्यूबरनेट्स टू डिप्लॉय मर्न ऐप? हाँ, डॉकर और क्यूबरनेट्स होता है बिकॉज नाउ इंडस्ट्री हैज चेंज्ड. तो एट द टाइम व्हेन आदित्य वाज अ स्टूडेंट तब ये नहीं था उतना ज्यादा तब नहीं पिक्चर में, था. बट हाँ अब ये लोग पूछना शुरू कर चुके हैं. तो यस, दिस इज पार्ट ऑफ आवर करिकुलम. तो जैसे हमने नीचे तुम्हें दिख रहा होगा आर्टिकल चला रखा है, करियर बूट कैंप फॉर प्रोफेशनल्स वाली चीज ना, तो उसको तुम देख सकते हो. राइट, दैट इज समथिंग व्हिच यू कैन. डू वी यूज डीएसए एंड सीपी नॉलेज इन कंपनी? ये तो हम बता चुके हैं आई गेस. आदित्य ने This is नहीं just बताया give था us यार. a short summary on this question. We don't use CP in our work, but yes, data structure is something we use. It helps us like optimizing the solution, and many of the times you are asked to optimize this. Like some of the times you get very high latencies calls, and you have to figure out your own algorithm, your own code to solve that problem. And at that time, that logical thinking that you developed while doing DSA comes very handy. बिल्कुल. तो भाई डीएसए तो तुम्हें चाहिए ही, और सीपी तुम्हें चाहिए इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि तुम टफ प्रॉब्लम्स को कैटर कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि सीपी एक ऐसी चीज है जो तुमने नहीं पढ़ी तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, बट सीपी पढ़ी तो इट्स अ गुड स्किल टू हैव. Yes. तुम्हें मैथमेटिक्स में काफी ज्यादा स्ट्रांग ग्रास्प हो जाएगी. तुम्हें Hmm. पता होगा क्वेश्चंस को किस तरीके से तुम कर सकते हो. ब्लाइंड 75 ब्लाइंड भाई नहीं, मैं ये नहीं बोलता हूँ. देखो 75 ब्लाइंड जो है दैट इज समथिंग जो कि है अंकित गौर का क्वेश्चन है. 75 ब्लाइंड इज समथिंग जो मोस्टली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं. बट ओए राउंड्स का क्या भाई, निकालने तो मेन ओए राउंड्स है ना. अगर ओए राउंड्स में जाना चाहते हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत यार एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ओए राउंड्स के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा. Hmm. And also, it never depends on the number of questions. It depends on how well you solve one question. हम्म. एक का क्वेश्चन है कार्तिक, एक्चुअली फैमिली मेंबर्स आज वी आर 40, क्या हम कोडिंग ब्लॉक चले जाएं, कैन दे हेल्प? 40 साल पे हो, अब मुझे नहीं पता तुमने क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा. डीएसए पढ़ा था कभी, नहीं पढ़ा था, जॉब का एक्सपीरियंस कौन सी फील्ड में है, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, या टेक के अंदर ही है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब थोड़ा सा तो रेज्यूमे तुम्हारा देखना पड़ेगा.
then only I would be able to tell. But हाँ, 40 साल के हो, अगर आईटी में घुसना चाहते हो, तो आई नो पीपल जो 25 साल एक्सपीरियंस हैं, 30 साल एक्सपीरियंस, और गूगल के लिए अप्लाई करा था, गूगल ने बोला भाई सीपी पूछेंगे, और उसने बोला, और मेरी बात हो रही है, और उसने बेचारे ने सीपी पढ़ी, और तब जाके उसने बेसिकली गूगल गूगल के अंदर बैठ के उसका किया था। तो ये तो होता ही है भाई, आईटी के अंदर तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो दिस इज समथिंग विच इज रियली मतलब इम्पोर्टेंट टू डू अगर तुम करना चाह रहे हो तो। तो ठीक है, आई गेस मोर और लेस वी आर डन विद ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चंस। एनी लास्ट एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स आदित्य, एज समवन जो अमेजोन के अंदर लोगों को हायर कराने में भी, मतलब रेफरल में भी हेल्प करते हैं, इंटरव्यू में भी अमेजोन के यू आर इन्वॉल्व समटाइम्स, सो एनी लास्ट एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स जो भी अमेजोन के लिए अपीयर करना चाह रहे हैं, या जो भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए अपीयर करना चाह रहे हैं, लाइक जस्ट पे, अमेजोन, एनी एडवाइस? Right, right. Mm, so yeah, I do have advice. This advice is very specific to the college students. Uh, so see, if you are a beginner, like you should like spend some amount on courses. It's always an investment. It's not key you're wasting those money or giving it away to someone with no reason. It's always good to have a course because course gives you like it gives you like सब कुछ एकदम आपके सामने थाली में परोस के रख देता है, but still even if you take the course, you are the one who is going to study. You have to study, you have to spend times, you have to spend hours of your hard work. At any point of time, any point in time, one individual has to work really hard to level up. Like, Hmm. and it can be any time. For example, if you didn't study in college, you didn't land a good job, while doing not so good job, you start giving those like hours of your efforts, and after giving them you land a good job. It's same as like same is also valid for other situations as well. For example, when you were studying in your 12th, uh, you studied really hard, you got in a good college. You didn't study, you got in a tier 3 college. Like you can अब खुद समझ सकते हो. And or apart from this, revision is the key, or I would say consistency is the key. You have to constantly keep on revising the stuff that you once know. Like it's very common for people to forget. See, you are a human, you're not a बिल्कुल, machine. You बिल्कुल। people forget very easily. हाँ, Even if you are a master of DSA, after 1 or 2 year, I would ask you any question, you won't be able to solve it. Will be some degradation in your level. So consistency is like key in everything actually, not only in DSA. बिल्कुल, So yes, at my time, Uh, I knew this, but I didn't know the importance of it. बिल्कुल। तो इस पे व्हाट आई फील इज, जैसे इंडिया के अंदर क्या है, हम लोग ना कुछ चीज करते हैं, इट्स नॉट कि हमें अपने लिए कुछ करना है, बिकॉज ये ट्रेडिशन है एक ना हमारा कि ये होता ही है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10th के बाद साइंस लेता हूँ, इट्स नॉट बिकॉज कि मैं वो लेना चाहता हूँ, इट्स बिकॉज हम समझते हैं साइंस के लोग आर एलीट पीपल, तो भाई यही चाहिए होता है, ये तो मस्ट टू डू है, अगर ये नहीं कर पाया तो सब सोचेंगे भाई मैं फुद्दू हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल बेकार हूँ। फिर जब हम साइंस में होते हैं, या तो हम एमबीबीएस या हम इंजीनियरिंग, और तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं। अब Hmm. इसमें हम जाते हैं तो हम सोचते हैं चलो भाई, मतलब अगर इंजीनियरिंग में आ गए तो अब इंजीनियरिंग में तो करनी है, क्यों? क्योंकि एक है ना भाई, बीटेक मिल जाएगी तो कुछ ऐसा हो जाएगा दुनिया के अंदर, हम नेक्स्ट लेवल कर जाएंगे। तो वो भी अगेन कुछ नहीं होता, बीटेक करके आदमी को समझ आता है भाई ये क्या था, मेरे तो पैसे फूक गए, और आता जाता कुछ नहीं है। होता इससे होता ज्यादा है. तो मेरे को 12वीं के बाद आता था, वहां पे कम से कम जेई का पेपर तो निकाल सकता था। अब तो ना कंपनी का पेपर निकलेगा, अब ना जेई का पेपर निकलेगा। दो और बुरी हालत हो गई, अगर बैक आ गई तो और फंस गए। Right. तो नेक्स्ट लेवल ही डर होता है उसका ना। तो आई फील कि इंडिया के अंदर ना लोग एजुकेशन पे इसलिए स्पेंड करते हैं, दैट इज समथिंग बिकॉज दे हैव टू डू, वो तो ट्रेडिशन है। Hmm. तो जैसे 12 से लाख 15 लाख इंजीनियरिंग की फीस होती है, Mm-hmm. लोग वो दे देते हैं बिकॉज है भाई, देनी पड़ती है, Right. एवरीवन डज। Right. Right. बट किसी को अगर तुम बोलोगे ना यार, ये ना 1500 रुपए की किताब है, ये 1500 रुपए की किताब खरीदनी है, सबसे पहले जाएगा भाई पीडीएफ फॉर दिस पर्टिकुलर बुक, Right. इसको Right. हम Right. डाउनलोड।
पीडीएफ ढूंढेंगे पहले, और या फिर कुछ और कुछ जुगाड़ लगाएंगे कहीं से ना, ये चीज फ्री में हो जाए। और वो उतना ना फिर बात बन नहीं पाती, इंसान अगर उस पे करना नहीं चाहता ना। दिस इज एप्लीकेबल हम्म। फॉर एवरी स्किल दैट यूल एवर गेन अपने साल मतलब पढ़ते हुए। राइट। सो आई थिंक 40 साल वालों की जॉब लगवाओगे तो दो चार भेज दूं, मेरे रिश्तेदार है यार। देखो इनको भेजना, विल टॉक टू देम, एक बार इनका रेज्यूमे भी लेकर आए, विल सी व्हाट ऑल स्किल्स दे हैव, व्हाट ऑल थिंग्स दे हैव डन, उसी के बाद वी कैन डिसाइड। क्योंकि मैं अब्रप्टली बोल दूं ऐसे ही हो जाएगा, एंड विदाउट सीइंग देयर बैकग्राउंड, दैट इज समथिंग व्हिच इज रियली टफ। तो एक बार देखना हम्म। पड़ेगा है ना उन्होंने क्या कर रखा है, उसके हिसाब से हम ये वाली चीज के ऊपर कर पाएंगे। So I feel that's it for this particular session from my end, and it was great to have you back, Aditya, on Coding Blocks YouTube channel. Thank you for The pleasure is joining. mine, Karthik bhaiya. Thank you for joining and motivating students. So I hope बाकी जितने लोग हैं उनको आज कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझ आया होगा कि क्या चीजें होती हैं। और मैं करियर बूट कैंप के बारे में लास्ट में एक ऐसी चीज बताऊंगा दैट यू शुड नो। देखो यार, जो करियर बूट कैंप होता है ना, काफी सारे लोग होते हैं जो अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो सोचते हैं कि यार हम अगर पढ़ रहे हैं तो हम उतना टाइम नहीं दे सकते, हमारे पास जॉब के अलावा उतना टाइम नहीं होता कि हम एक्चुअल में स्पेंड कर सके अपने ऊपर। ऐसा नहीं होगा, मतलब तुम एक जो लाइफ में फंसे हुए हो ना, उसी में तुम स्टक रहोगे। क्योंकि होता क्या, जॉब से आके थक जाते हो, सोते हो, सुबह उठते हो, वीकेंड पे तुम फ्री होते हो, जाते हो, बट तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो मारने ही पड़ेंगे। और वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स अगर तुमने इनिशियली 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने मार लिए, तो जो नेक्स्ट आपके 10 साल, 12 साल, 15 साल जो होंगे, दैट वुड यू फील कि हाँ मैंने जो मेहनत करी थी उससे मेरे को इतना बेनिफिट मिल पाया कि मेरे को ना जो ग्रोथ लगता था कि 10 साल में मिलेगी, हो सकता है मैं 2-3 साल में ही ग्रैब कर गया, और मैं बाकी की लाइफ के अंदर चीजों को और एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ और टेक्नोलॉजी सीख पा रहा हूँ। एंड उसके बाद चीजें अपने आप तुम्हारे लिए सॉर्ट आउट होती जाएंगी, रास्ते अपने आप खुलते रहेंगे। एक कंपनी निकालनी होती है, जस्ट आदित्य ने जैसे बोला जस्ट पे निकाली, अब आई एम प्रीटी मच श्योर कि गूगल भी आदित्य को बोलता होगा कि एक बार हमारा इंटरव्यू दे दो, माइक्रोसॉफ्ट भी बोलता होगा कि यार हमारा एक बार इंटरव्यू दे दो। ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग व्हिच ही वुड नॉट एग्री, बिकॉज ठीक है मतलब सब करते हैं ऐसा, ही वुड नॉट एग्री कि हाँ ऐसा होता है, बट सबको पता होता है कि होता है मार्केट के अंदर ना। तो Hmm. जो है सो है, क्या कर सकते हैं। Right. But this program is going to start from the scratch, and it is going to take you till the end. Development में, data structures में, competitive programming में, और DevOps में, सारी चीजें इसके अंदर होंगी। तो पूरा पैकेज है, that would help you out, क्योंकि अब और चीजें ऐड हो गई हैं जो पहले नहीं थी। Okay, so questions हैं भैया। Currently I'm doing DSA, but I didn't get that much confidence. So after finishing course, can I go for development? या डीएसए में ना कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक कंपनी नहीं निकल जाती। बाकी एक बार आदित्य भी इस पे मतलब बता सकते हैं, मतलब तुम्हारा क्या था आदित्य, जैसे तुम पढ़ते तो तुम्हें था कॉन्फिडेंस कि हमने पढ़ लिया है तो भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ हो सकता है। So, if I imagine myself as a student of third year, no, definitely no. इंटरव्यू में पहली बार जाओगे, हो जाता है काम वहाँ पे। नहीं कुछ समझ आता ज़्यादा, तो वो नर्वसनेस रहती है, एंड इट गोज आफ्टर फर्स्ट इंटरव्यू। इट्स नॉट अ बिग डील, एवरीवन फेसेस दैट काइंड ऑफ नर्वसनेस। And yes, you, like, you can manage it, like, kind of smartly managing it, भाई। ये सिर्फ तब हो सकता है जब you keep on practicing. Again, practicing and consistency is the key. Like, if you kept on practicing, confidence will build up. बिल्कुल। तो कॉन्फिडेंस यार वही है, मतलब पढ़ो, चीजें करो, हैकाथॉन्स दो, और टाइम डिनोमिनेटर प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कर पा रहे हो, भले ही उसमें से सारे नहीं हो रहे, 3 हो रहे हैं, 4 में से 5 में से 3 हो रहे हैं, तो तुम्हें लगेगा हाँ कि आई एम इम्प्रूविंग, स्लोली आई एम इम्प्रूविंग। One more thing I would like to add, just got into my mind, very important thing. So these contests that you give on Code Chef, Code Forces, they actually give you, like, very high confidence, like sometimes overconfidence, but उतना नहीं जाना है। Like, I'm हाँ, talking from personal experiences.
Okay. I, I gave interview for NCR and he rejected me because I was overconfident. हाँ So yes, these contests give you a lot of confidence. So, this is how you बिल्कुल. can manage them. हाँ और डीए से सीख लिया है, चीजें आती हैं, प्रैक्टिस करते रहो. कॉन्फिडेंस तो अगेन जब कंपनी निकलेगी तभी आएगा, और जब हैकाथॉन्स में क्वेश्चंस होने लगेंगे तभी आएगा. और डेवलपमेंट के लिए यस यू कैन एब्सोल्युटली गो फॉर डेवलपमेंट, अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर्स वाली चीजें कर ली हैं तो बिल्कुल. कार्तिक भाई हिंड्रेंस यही है, एक से दो जो कैरियर गैप के लोग होते हैं, अगर स्टार्टअप्स भी आते हैं, हमारे पास स्टार्टअप्स भी आते हैं फॉर द पीपल, एंड उसके अंदर लोग जा सकते हैं, दे कैन एक्चुअली गो फॉर इट. तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टार्टअप्स नहीं आते, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी आती है, स्टार्टअप्स भी आते हैं, तो एवरीथिंग इज देयर. तो वो हो जाता है, उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है. या देखो मेन तो लर्निंग है ना. मैं अगर तुम बोलो मैं स्टार्टअप में जाना चाहता हूँ, स्टार्टअप क्या बोलेगा कि आपने क्या कर रखा है ये बताओ. तुम बोलते हो मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहता हूँ, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या बोलेगी, हमारा टेस्ट क्लियर करो और तुम्हें क्या आता है ये हमें बताओ. उसके बेसिस पे डिसाइड होगा आई फील कि किसमें होगा, और बाकी तो मतलब तुम्हारे ऊपर ही है. ठीक है, तो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन दैट इज समथिंग व्हिच वी कैन आंसर अगेन, अदरवाइज विल टेक द लीव. एंड इट वाज अ ग्रेट सेशन अगेन विद आदित्य. मजा आया तुमसे बात करके, Yeah, हमेशा ही same आता here, है. भैया. एंड thank you so much for coming and enlightening students for how to become probably SG2. तो I really hope I was able to help just this much. बिल्कुल. तो इम्पैक्ट ऐसे ही पड़ता है, थोड़े से भी लोगों का लगता है कि हम चीजें कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आता है. हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा, कॉलेज से कोई मदद नहीं, पेरेंट्स से कोई मदद नहीं, कोई तो है जो मदद कर सकता है. वो जो मतलब होती है ना चीज, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. Yes. डेवऑप्स होता है ध्रुव शर्मा कोर्सेज के अंदर. भैया नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ और ये करना चाहिए. भाई वही मतलब पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए. डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ो, डेवलपमेंट पढ़ो, डेवलपमेंट को पढ़ के प्रोजेक्ट्स बनाओ, प्रोजेक्ट्स अपने रेज्यूमे में डालो जो कि डिप्लॉयड हो, और कंपनीज में जाके अपनी जॉब ले लो आराम से. दैट्स इट. Right. और कुछ नहीं कर सकते हो. नॉन टेक बैकग्राउंड से हो तो ठीक है, कोई नहीं. हर कंपनी तुम्हें शायद अलाउ ना करे, बट स्टार्टअप्स वुड अलाउ यू एंड तुम उनमें घुस सकते हो. Yes. ठीक है, तो आई गेस दैट्स इट. चलो गाइस, बाय बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन. इट वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू गाइस एज वेल. और अगर आप कनेक्ट करना चाहो तो आई वुड रिक्वेस्ट आदित्य, अगर हो सकता है तो आप अपना लिंक्डइन आईडी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, और हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ताकि लोगों को अगर कुछ हो, पर्सनली पूछना हो, कभी कनेक्ट करना हो, तो दे कैन एक्चुअली कम एंड कनेक्ट विद यू एंड टॉक टू यू. Sure, sure. I will definitely share my तो हम आपको profile. चैट में उनका भी डाल देंगे, एंड आई विल ऐड माइन एज वेल. अगर Yeah, I've sent it in the chat. तो मैं आदित्य की जो है वो वाली पार्ट इस पे हाईलाइट भी कर देता हूँ, तो कैन कनेक्ट विद हिम एज वेल, है ना. Yeah. आई शेयर माइन टू. ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे एंड अटेंडिंग द सेशन. ग्रेट हैविंग डिस्कशंस लाइक दिस, बिकॉज इससे बच्चों को जो फायदा होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, और उन्हें समझ आती है चीजें थोड़ी, क्योंकि वो होता है ना कि हमें उनसे जानना है जिन्होंने एक्चुअल में कुछ अचीव Right. करा है एज अ स्टूडेंट, जब उनके पास चीजें नहीं थी, वर्सेस नाउ Hmm. व्हेन दे हैव थिंग्स. सो थैंक यू आदित्य अगेन, एंड चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंड Sure, Karthik ऑल द bhaiya. बेस्ट. Yep. Thank you. Bye bye.